20. He holds a diploma in information system audit from ICI and is a certified forensic audit and fraud detection, and has a certified content auditor of banks. He has experience in the field of accounting services, internal audit, and third-party audit and startups. He had conducted several seminars on Google automations, MS Excel, and ChatGPT, which have helped members to automate small processes and save several man hours. He is presently a co-opted member of the Committee AI in ICI. I would like to welcome you, sir, to the today's workshop, and I would ask you to please take this session forward. Thank you, Siddharth, for the kind introduction. So we have a small audience, so let's make most out of it and let's be interactive. Rahul, आप घर पहुंच गए क्या? Yes, reached. So Google Forms कहाँ से start करेगा? Where do we start with? Like, I think so. A lot of us think that Google Sheets और Excel में बहुत फर्क है, और बहुत सारा चीज आप Google Sheet में कर सकते, Excel में कर सकते जो आप Google Sheets में नहीं कर सकते. तो एक अगर if you can get that kind of clarity, फिर the advantage of Google जो मेरे को लगता है Google Workspace का is the beautiful thing of co-working, मतलब कि you can work parallelly, और उसमें किसने क्या क्या चेंजेस किया वो पूरा हिस्ट्री दिखता है. So if you can show all of that, फिर Google Forms वगैरह, क्योंकि हम लोग को I think we need to prepare a lot of master data and all that stuff. So how Google Forms can help in that. तो ये सब चीजें I think you should, आप ये सब cover करेंगे तो very good. We are a small group. Let's make most out of it and let's keep the session engaging rather than मैं एक monologue बोलता रहूं. तो जैसे आपने initially question पूछा, तो I'll start with that only. पहला question ये है कि what is the difference between Google Sheets and Excel sheet, MS Excel? So both in terms of capabilities are same, but the only difference is that if you are using, so there are two scenarios in MS Excel. One is that we are using Excel on desktop. Second is that we are using Office 365 on OneDrive. So in case you are using Office 365 on OneDrive, then it can be used as a collaborative working tool. मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा OneDrive पे एक Excel sheet है, तो I sitting in my office, Rahul we are sitting at his office, can all both work parallelly on the same Excel sheet. Apart from that, the limitation which Excel has, that it will, when up, say even if in a server kind of atmosphere, if we have opened one Excel sheet at one computer, so opening the second would whenever you open a second from even from the server, it will show that it's a read-only file and you cannot work parallelly. So अब इसमें एक बहुत simple use case है कि I was supposed to meet a client, so and it was just a random call कि sir हम आपसे मिलना चाहते हैं. आप सुबह the gentleman call at around 10 and he said, can you meet us at 2? So as we have OneDrive, तो मैंने बोला कि चलो I called my office people कि let's do an ROC search first and इसके last 4 साल के numbers को एक जगह tabulate कर लेते हैं with ROC documents. So this was only possible considering that we were working on OneDrive. So अगर normally very less people use OneDrive, तो in that case आप same Google Sheet में जाते हैं और 4 आदमी parallelly उस चीज पे काम कर सकते हैं. तो एक फर्क है. But again, very good advantage of Google Sheets is that जो version history मिलता है, वो version history कैसे मिलता है मैं भी आपको screen share करके दिखाता हूँ. तो idea ये है कि whenever you मतलब there's a log. I'll just share my screen on that. सोचिए मैं अपनी कोई भी एक एक्सेल शीट जो है, इसे हम कभी बना रहे थे टॉपिक्स फॉर ब्लॉगिंग, राइट? So आप जब फाइल पे जाते हैं
तो फाइल पे देखिए यहाँ एक वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। तो सी करंट, सी वर्जन हिस्ट्री, इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इट विल ऑलवेज शो लॉग कि कब कब कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ। ये देखिए, ये मेरे राइट साइड में जो पैनल है उसमें दिखा रहे हैं 29 मार्च में, ये 24 तारीख को हुआ। तो 24 तारीख को ये शीट में क्या डेटा था। सो व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन इट, सो इट इज शोइंग कि ये शीट खाली थी। फिर इस टाइम पे जाते हैं तो ये 5 चीजें डाली हुई थी। फिर 29 मार्च को जब जाते हैं, सो ये चीजें ऐड हुई। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्जन हिस्ट्री। सो अगर कोई कोई भी कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट है, and the only difference is that I have been only working on these three dates. So has this been a collaborative environment? So अगर आप कुछ change करते हैं, या the kind of anyone who is changing will always reflect in this version history. So this is the benefit of Google Workspace, या Google Sheets you can say precisely. All we are next. कंटिन्यू कंटिन्यू फ्लो ले लिया तो अजीज, ये तो कंटिन्यू रिजॉल्व ना, तो कोलैबोरेटिव एक्सेल वगैरह। नहीं, इसके सिवाय और कुछ स्पेसिफिक हो तो ठीक है, नहीं तो देन आई विल कंटिन्यू इन माय। हाँ, यू कंटिन्यू इन योर फ्लो एंड देन वी विल पिंग यू इन द फ्लो। ठीक, श्योर। सो एक बहुत अच्छा फंक्शन विच आई ऑलवेज फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इज गूगल टेम्पलेट्स। तो गूगल टेम्पलेट्स क्या होता है, इन केस एनी वन ऑफ अस यूज और आर यूजिंग, अगर एनी शो ऑफ हैंड्स फॉर दिस। जैसे मैं अगर एक मेल लिखता हूँ, एंड आई फील दैट दिस मेल इज ऑलवेज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय मी, राइट। So all what I can do is I can make a template of the same. Say for instance, we as professional have to always send uh, reminders for one is due date, and second for collection of document, and second could be for reminders for payments. So आप एक repetitive मेल को ऑलवेज या तो टाइप करते हैं, या आप एक वर्ड फाइल में लिख के रखते हैं, या थर्डली आप उसको लास्ट मेल जो भेजा हुआ रहता है उस पे वापस से उसी सेंड मेल पे जाके उसको थोड़ा एडिट वेडिट करते हैं। सो जैसे हमने आपको एक अभी टेम्पलेट दिखाना चाहूंगा विच इज फॉर इंटरव्यू। वी की ट्राई एंड ऑलवेज फाइंड न्यू रिसोर्सेज और रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज अ टेम्पलेट विच वी हैव मेड फॉर इंटरव्यूज की। जस्ट होल्ड ऑन। सो इसमें ये है कि हमने इस पे, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ कि कंपोज किया हमने। तो अगर मैं काफी रेगुलर इंटरव्यूज लेता हूँ, तो मैंने एक टेम्पलेट बनाया, रिप्लाई फॉर इंटरव्यू। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे मैंने इस टेम्पलेट पे क्लिक किया, सो टॉप सब्जेक्ट आ गया रिप्लाई फॉर इंटरव्यू, एंड देन फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइज मेल कि हाय, जस्ट आई ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू राइट द नेम हियर एंड द डेट हियर, कि भाई ऑन आपको कब आना है, ये जून लिखा हुआ है विच शुड आइडियली बी ब्लैंक। सो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ बेस्ड ऑन म्यूचुअल अवेलेबिलिटी, और एक मेल मैंने ड्राफ्ट करी हुई है। तो सोचिए ये मैंने अभी नया ब्लैंक इस पे लिखा है, ठीक है। तो मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं ये 3 डॉट्स में जाता हूँ, टेम्पलेट्स में जाता हूँ, रिप्लाई फॉर इंटरव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी कि इस मेल को मैंने फिर से बंद कर दिया। आई गो टू दीज 3 डॉट्स अगेन एंड देन रिप्लाई फॉर एन इंटरव्यू। अब देखिए ये फिर से मेल आ गया, ये सेव नहीं हुआ है। तो देखिए अब वो टेम्पलेट फिर से सेव हो गया हमारा, और पहले यहाँ ब्लैंक नहीं आ रहा था, अभी ब्लैंक आ गया। सो इन जस्ट द आइडिया ऑफ पुटिंग अक्रॉस इज कि अगर आप रिपीटेटिव मेल्स डालते हैं टू योर क्लाइंट स्टेटिंग दैट गिव अस जीएसटी डेटा,
or you have a send a standard template कि after 30 days of outstanding you would send an email to your clients asking for payment. तो आप एक template बना लीजिए and the office whoever you are delegating the job can just simply write a small changes which he is required to, and the rest body, the language, the standardized process remains the same. So this was about Google templates. अब इसको आप how do we start this? So for starting this, we need to go to Gmail, then we need to go to settings, see all settings. So there's an option called advanced setting here, and then usually this is disabled. आपको इसको enable करना पड़ेगा templates को, and as you enable the templates, आपके mail पे वो activate हो जाएगा. So this was about Google templates. Second is vocation responder, because where people who have worked in corporates would appreciate or will remember things like ki, whenever they are on leave, so they send a vocation responder ki, hi, I am so and so, and I am on leave. So and me or whoever would get back to you, or I'll get back to you in 3 days, or I am not there in for 3 days. So ऐसा type का mail हम भी use कर सकते हैं. Say for instance when we are on 27th, 28th of September and we are always on a pressure to file returns. तो आप एक नॉर्मल वोकेशन रिस्पॉन्डर डाल सकते हैं, या दुर्गा पूजा के टाइम में एक वोकेशन रिस्पॉन्डर डाल सकते हैं स्टेटिंग माय ऑफिस इज ऑन लीव, इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी प्लीज फील फ्री टू कॉल अस एट दिस नंबर. तो द आइडिया इज कि अगर आपके यहाँ दुर्गा पूजा की 4 दिन छुट्टी है, बट somebody calling from outside West Bengal may not realize or appreciate the fact. So it's easy for him to be aware of the fact कि हाँ आपको, या you're traveling somewhere, so my hi, I'm traveling, and your emails or replies to emails can be delayed. So in case of any urgency, please feel free to contact us. So this small tool helps you to put in the correct perspective. आप what अगर आप बाहर हो और आप नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, तो एट मैक्स आप क्या करोगे, एक दिन बाद या जब भी आप उसको मोबाइल से देखोगे, आप उसको ये देखोगे कि आई विल रिप्लाई यू इन सम टाइम. So this is getting automated, and you can then enjoy your holiday, or probably if you are in a busy season of tax filing, you can take care of your better work as compared to this. This is a one small tool which we always like. Again, how to enact that? So you go to settings, and in the general setting, there's an option called vocation responder. Followed by that, आप मानिए कि एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छी सिचुएशन है कि आप ऑफिस के बाहर हैं, और कोई भी आप असाइनमेंट या कोई भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, आप ऑफिस में बोलते हैं कि मेरे को ये मेल करो. वो एक बंदा आपको मेल करता है विच वुड लाइक लुक लाइक कि पहला एक मेल आया आपके पास कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड. फिर व्हाट यू वुड डू कि यू विल सेंड हिम कि इसमें मेक दीज चेंजेस, देन he'll again make the changes, and he'll send you a mail at to after 2 minutes. Then फिर आप बोलेंगे नहीं इसमें फाइनल ये चेंजेस करो, फिर वो एक वापस से चेंज करता है, फिर आपको एक मेल भेजता है. So as a result, one, that there are 3 emails. After 2 years, probably when you are finding the email, you will always get confused कि कौन सा email फाइनल था, कौन सा नहीं था. और दूसरा है कि आपको अगर जरूरत नहीं है तो एक जंक को आप क्यों अपने साथ रख रहे हैं. तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? The alternative is, I'll show you. I'll again reshare my screen once. The best alternative is that other than sending multiple emails, we can tell that, guy, I go to Google Drive, और सोचिए ये मेरा एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, या ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट है. तो इसको मैं rather than sending as an attachment, I'll share a link of this. और शेयर करते समय when we copy the link, please make sure that you manage the access. बहुत बार हम उसको मेल कर देते हैं
but we forget to give access to the client, yeah, whomever we are sending. So one is कि मैं कैसे उसको access देना चाहता हूँ. Anyone with the link. So the idea is anybody who has the link will be able to access the document. And what are the rights and permission I want to give him? One, I want to give him only viewing rights. He can see, or I can comment, or I can edit. So for my case, I considering that I want to make changes, and even I want to tell someone to make changes, I'll take the editor right. And then I again go to compose. तो जी मैं अपने आप को ही मेल डाल रहा हूँ. Again audit report of XYZ. This time, rather than send attaching the file, what I would do is I'll सोचिए यहाँ मैं लिखता हूँ PFA and link my document with this. So how do I link? I insert a link here. I insert the URL here. As a result क्या हुआ जब मैं इसको send कर रहा हूँ तो email चला गया and this document later would look like this. And whenever I click at this link, it takes me to the document. So आप सोचिए कि आपको अपने ऑफिस में किसी को बोल रहे हैं कि चेंजेस करो. So he is simultaneously changing the document on a Google Drive, and you will be able to refresh and see that what are the changes done. So this helps you with the problem of these multiple emails which we send over a period of time. So this was one example of multiple emails. So this was the process flow कि आपको कैसे करना है. आप कुछ भी एक वर्ड टाइप करते हैं और उसके बाद उससे लिंक कर देते हैं. एक बहुत अच्छा सिचुएशन है. सोचिए कि आई गेट अ ईमेल नाउ and as I am in this session and post this I'll run to my home. So I would want the system to make this email visible again, or I want this to make me remind tomorrow. So how do I do it? कि एक मनी बहुत अच्छा ये आया GST demand and appeal remedies. So this is a email stating that institute will be having a program. So I want to register for this, but not at this point of time. So I'll go to snooze, the last icon here, and I tell that I want to snooze it. So it gives me an option. कि भाई आप, so one, when I was going on snooze, here, it had predefined list ki tomorrow at 8 p.m. later this week, next month. So rather than that, what I'll do, ki, considering that I come in the morning, so I'll try and take up this at 11 a.m. So what happens कि मेरा मेल यहाँ से गायब हो गया और ये कल सुबह 11 a.m. this would appear to be as top mail here. And again, this will show as that I have snoozed this. एक बार try करते हैं how would it look like. Say for instance, I am on 16. I go to 17, 19, 28, 26. 6 p.m. So I hope कि ये ऊपर आ जाएगा in some time. So this was a small situation of snooze. Again, इसको थोड़ा सा और अगर आप आगे लेके चलते हैं कि considering that I not only want to snooze, but I manage all my. So as I jump into this next conclusion, next situation, I'd like to introduce two things to you. One is two small apps which are of Google and which are free. And again, these are synchronized as Gmail is synchronized with our email on our mobile. Sorry, as Gmail on desktop is synchronized with our mobile phones. These two apps can also be synchronized on your mobile, and these are free of cost. So one is a app called Google Keep. So this is what Google Keep is. And second is an app called Task. So Keep is basically where you can note down your plans. I want to take a note. Right. So if I extend this, तो एक नया window खुल जाता है इसका. तो आपको जो भी चिट चैट, जो भी आपके प्रोग्राम्स है, जो भी आपका, क्योंकि आज आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि सेशन के कुछ अच्छे चीजें हैं विच यू वांट टू राइट, आप एक नोट बनाते हैं and आप उस पे यहीं पे you can easily type. So these are few of my notes which I have made for myself.
करेक्ट. सो अगेन ये है कि आप उसको टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं. यू कैन मेक चेक बॉक्स. सो वेन एवर यू डू इट यू क्लिक. सो आप सिंपल है कि आप दिन रास्ते में when you are way back to your office, when you are coming to your office, you think that these are the 5 priorities which I want to take. So आप एक checklist बनाते हैं, and as you keep on doing the work, you can make a tick of these things that these were the priorities which you have planned for the day and you have been able to achieve. And but again, a good part of this is that you can make a collaboration. What do I mean by collaboration? Say, for instance, I can add someone. So Rahul Rungta was on call. I can add him this, stating that I want on this checklist or this work or this note, I want to have your inputs also. Say, for instance, कि मैं ये session लेना चाहता हूँ. So he had asked me to plan a session. So these are my input. I want him to share his input. So this can be easily done through Google Keep. So again, free of cost, very easy to handle, and again at your convenience. So ये एक बहुत अच्छा app है. In case you are not using, please use this. So this was one, and then again you can make reminders of this. The best part is that it can make reminders on geolocation also based out of from your phone. So you are way back to home, so you can make reminders कि इसमें क्या क्या reminder आपको डालना है. Again you can add collaboration, so whatever जो वो तो normal है इसमें जो मैंने आपको बताया. So this was a very good tool which we can use. Again I come back to my situation. देखिए ये मैंने 2 मिनट पहले snooze किया था. It is saying that snoozed 1 hour ago. So ये सॉरी मैंने सेशन से पहले स्नूज किया था इसको. तो ये आपने जब स्नूज किया 1 hour ago, तो अभी ये वापस से आपके टॉप लिस्ट में आ गया कि दिस वाज स्नूज्ड बाय यू. So this is how snooze work. अगर आप काम करते करते आप you are into something and you want this to be reminded 2 hours later also, so the snooze will work for you. And again, one more situation which can happen to this email is that I click on this email and then I can add a task on this email. मतलब इस मेल को मैंने सिलेक्ट किया और इस मेल पे मैंने एक टास्क बना लिया. सी फॉर इंस्टेंस मेरे क्लाइंट के पास एक जीएसटी की नोटिस आती है या इनकम टैक्स का भी कुछ डॉक्यूमेंट आता है या कुछ भी आता है. So he has sent me a mail. We had a discussion. Post the email, we have a discussion. So one is I write my discussion कि मैंने ये पैन नंबर मांगे, ये क्लाइंट का डेटा ऐसे मांगा. या तो मैं इस पे कर सकता हूँ या मैं इस मेल के रेफरेंस में लिखता हूँ कि आई हैव asked for party wise payment details. ये मेरा इसमें हो गया. आप इसमें चाहते हैं कि आप टाइम भी चाहते हैं तो इसमें आप एक टाइम डाल दीजिए कि इस समय तक उन्होंने मेरे को देना था. So these are good productivity tools which are again free and can be used to the best of our availability, right? जैसे आपका हो गया, आप इसमें डिलीट कर दीजिए. आपको लगता है कि आपको इसमें एक उसने पैन नंबर भेजा और पार्टी का डिटेल्स भेजा बट यू हैव आस्क्ड फॉर सम करेक्शंस. तो आप इसमें फिर अगेन यू कैन राइट दैट आई नीड पेमेंट वाइज एंट्री, देन डिटेल्स और ये कब तक आपको चाहिए. सो दीज टूल्स कैन वन बिकॉज एवरी टाइम क्या होता है कि आप एक डायरी में लिखते हैं, फिर वो डायरी 3 दिन 4 दिन आगे पीछे हो जाती है, या आप अगर क्लाइंट लोकेशन पे भी हैं. So these are all again on cloud. So whenever you are available, you can ask him कि सर मेरी हमारी आपकी इस टॉपिक पे बात हुई थी, ये देखिए मेरे पास नोट भी लिखा हुआ है, and this is there. So it's a very good tool to keep your documents data arranged as such. And this is one of my favorite topic called schedules, and I hope all of the people may or may not be aware. सोचिए कि I been working or during our child our articleship time, if I was given a work कि भाई ये काम आपको करना है and I know कल मेरे को लेट ऑफिस पहुंचना है, तो सर ने बोला एक बैलेंस शीट बना के आप आज रात को मेल कर दीजिएगा बिकॉज वी हैव अ क्लाइंट मीटिंग टुमारो. So what I can do कि if I'm able to do it on time, but still to show that I've been working late night, I write an email to Bihani.Sumit again. I write balance sheet. I attach the respective file, and rather than sending now, what I'll do, I'll go to schedule send. I'll pick up the date and time कि भाई मेरे को ये 7/17 को तो
एम पे भेजनी है, तो मैं इसको शेड्यूल सेंड कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरे सेंड मेल्स पे नहीं गई, इट हैज गॉन टू माई शेड्यूल मेल्स। सो व्हाट वुड हैपन कि मैं अगर ये अपना लैपटॉप बंद भी कर देता हूँ, तो 17 अप्रैल मुझे रात को 2 बजे वो मेल जाएगी उनके पास, एंड आई कैन से यू नो योर वर्क वाज सो हाई, मैं बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, आई वाज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, तो मेरे को बहुत लेट हो गया सर, 2 बजे तो मैं सोया ही, सुबह आने में लेट हो गया। सो दिस इज अ वेरी नॉटी एग्जाम्पल दो। आप इसको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं कि सोचिए वंका भैया है या राजेश जलान जी थे हमारे जो लास्ट प्रेसिडेंट साहब थे, तो वो सुबह सुबह यूज ही वाज अर्ली टास्क मेकर। So I know that he gets up early and he'll see all his tasks or he'll plan his day in the morning. So मैं राजेश भैया को एक मेल डाल देता हूँ सुबह 7:30 में, बिकॉज आई नो दैट रात की मेल वो कब देखेंगे नहीं देखेंगे, बट 7:30 he'll sit with all his jobs. तो 7:30 he'll see my mail as the first email. So the way you want to plan your work or you want your perceived value to be done, like आप जिसको जिस समय रीच आउट करना चाहते हैं, that's a good way to deal. हम क्लाइंट का रात को 2 बजे तक काम करते हैं और उनको 2 बजे मेल करते हैं, तो why should we do that, 2 बजे भेजिए या सुबह 8 बजे भेजिए, तो rather than doing we can send him at 8:30 in the morning कि सर आपने बोला था आपको काम भेज दिया। सो नहीं तो उनको लगे अरे यार सीए तो मेरा 2-2 बजे तक मेरे लिए काम कर रहा है। सो दीज मतलब दीज सिचुएशंस कैन बी प्रॉपरली डेल्ट विद टू माय अंडरस्टैंडिंग, स्मॉल फंक्शन ऑफ शेड्यूल्स एंड फ्रॉम दैट नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि वी यूजुअली, जैसे आई हैव अ ईमेल आईडी कॉल्ड bihani.sumit@gmail.com, and my entire office uses a email id called ss.sumitbihani@gmail.com. So considering just there can be a situation where my client only has this email id at ss.sumitbihani@gmail.com, but he wants to send me a document which he wants that none of, and he knows the fact that my entire team or my entire office accesses the mail, that's a common email, but he wants it to be restricted. I want Sumit to see the email or a particular person in my team to see the email. Rest people should not see the email, right? Because जैसे मैं बोलूंगा कि वो चाहता है कि सुमित बिहानी मेल खोले, तो आप तुरंत बोलेंगे कि अच्छा ऐसा ही है, तो फिर वो सुमित बिहानी से या तो फोन करके मेल आईडी मांग लेगा। So अगर if there are 7 people in my team and only one person is dealing with the data, he want only that person to check my email. So कैसे करेगा? कंपोज पे जाते हैं, देखिए एक ऑप्शन है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, इस पे वन, so there are 2 3 features in this. One, that it can expire automatically, it can expire in 1 day, it can expire in 1 week, it can expire in 1 month. So these are the option, मतलब 1 day अगर होता है तो अगर कल के बाद परसों, यानी ये देखिए आपको बता रहे हैं दिस विल एक्सपायर ऑन वेडनेसडे April 17, तो April 18 को आपको ये मेल मेरे इनबॉक्स में भी नहीं मिलेगी। जैसे आपके व्हाट्सएप में भी होता है कि इट्स देयर फॉर 24 आवर्स एंड देन इट इज डिलीटेड। So this is one option. Second is no SMS passport or an SMS passport. I want कि एकदम confidential email है. I want to ensure that it being seen by only the relevant person. So I save, right? When I write my email ID again, I write balance sheet. And then I attach the document. So one, even I would like to show you one small thing that how do we attach emails, attachment to emails. So one is that यूजुअली व्हाट वी डू इज कि हम ये डॉक्यूमेंट यहाँ से उठाते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ तक लाते हैं, बीच इन बिटवीन अगर कुछ और खुल जाता है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर एक और क्या ऑप्शन है कि हम Copy paste. कॉपी पेस्ट, करेक्ट, दैट वाज माय थर्ड ऑप्शन सिद्धांत। So second option could have been कि we attach, we go to this attach option and then we attach, and the third which Siddhant has very correctly mentioned कि I go to copy paste, which I believe, but ये JPG फाइल होने से this act as a problem because वो मेल की बॉडी में आने लग जाता है। जी मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया, हाँ कंट्रोल वी कर दिया। भैया I have a query. The thing that you said अभी जो हम्म पासवर्ड वाला है हम्म उसमें how do we put on the password, like the SMS जो आएगा it will be SMS password, how does that work? 2 मिनट बस, हाँ आई जस्ट एड्रेस योर क्वेरी। सो I have sent this email to ss.sumitbihani@gmail.com, correct? Then I send. So ये तेरा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, इंडिया
Just tell me your mobile number. 987 987 412 412 9052. 9052. Yeah. The number is correct, right? Yeah. Send. So the email is sent from my side. Okay. Now I'll open another email ID called ss.sumit Bihani. So this is ss.sumit Bihani. Now it says that I have received an email balance sheet. The message sent in confidential mode. Right? ये दिखा सिद्धांत. हाँ. So now, if you remember, I have sent a attachment. I have sent an attachment here, right? Yeah. If you see the email, it says that there is no attachment. Now, Yes. how do I see? So I have to get a passcode to open this. So I say, okay, give me the passcode. So I believe there would be a SMS going to your email phone number. Yeah, the 579614. 579614. I submit this passcode. So now you Nice. see, so it is available, right? So before We cannot that, even download this. sorry, We cannot even download this. you will be able to download, I presume. Just allow it a minute to read. So again, it is asking for an password. So this is the beauty of sending emails via passport. And again, I'm not sure of just let's check that is it being downloaded. But there are print restrictions on this also. Can Yeah, you give me 951062. 951062? Yeah. It is written now you do not have options to forward or download this mail. Correct. Again, not seeing that. So It is written you cannot download this right, email also. right, it is written. So print restrictions were there. I have not checked for the download option. So you can only see it on Google Drive. So password protected with high encryption, no forward, no print, no download. So जो confidential email है, you can use this option to send emails as such. I hope your query is being answered, right? Yeah. So next situation is that we all of who have worked with Outlook Express, sorry. So if we have used Outlook Express, we will appreciate that we used to attach an attachment of we can attach email also as attachment on the other email, correct? So in case people have used, मतलब कि आप जब एक मेल को रिप्लाई कर रहे हैं तो पुरानी ट्रेल मेल को उसमें आप अटैच कर सकते हैं. But ये चीज, how many of us use in Gmail? Do we use? Can we attach emails as attachment on our Gmail? Any answers for that? Do we use what? Sorry, as attachment? So the query is that can we attach emails as attachment to an email? We can do that.
how बल्क can में we सेलेक्ट करके भी यू कैन फॉरवर्ड एज अटैचमेंट. तो से फॉर इंस्टेंस एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि हम जब क्लाइंट से डेटा मांगते हैं तो वो हमको 12 महीने के 12 स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर देता है हमारी ईमेल. और 12 मेल में करता है. नाउ यू कैन हैव इट इन वन मेल. My email ID would look like something like this कि ये स्टेटमेंट एक 4 से, एक 3 से, एक 3 से, एक 2 से, एक 2 से, because I have three email, three accounts. So एक एक से, so again there would be 12 emails. So what he will typically or what I would typically do is I'll forward these 12 emails to my chart accountant stating that ये मेरे 12 महीने का 12 स्टेटमेंट है और 12 ईमेल है आपके लिए. इसमें चैलेंज क्या होता है, 12 में काफी बार 11 भेज देता है या फिर हम फिर अगेन इसको अपने ऑफिस की टीम को फॉरवर्ड करते हैं और वहां पे किसी से भी स्किप हो जाता है. So the idea of telling or putting things in perspective was कि I select these 12 accounts, ये 12 हमारे पास या 5-6 email है, and I drag and drop this here. So what happens is कि these email will go to my other email stating that these are attachments. मैं इसको भेजा. rather inbox में भी नहीं पहुंचा है. तो I'll just go to my send items. तो देखिए these would look like this कि ये attachments दिख रहे हैं, and when I click on this there's a new window opening and इसके अंदर वो email है. So it's easy for us to manage the data because in between 12 email के बीच में भी अगर कोई एक email आ जाती है there are high chances क्योंकि you can miss one. And again to organize the data also it is a very good tool. So this was one small thing which I felt can help you while in the tax season as such. So then we would, I have already covered Google Task and Google Forms, Google Keep. So how many of us use work management software or office management software? Or I use a CA compliance tracking software. so tracking software, Siddhant, in that case would do would so something like जो हमारे what is the name of the software? So it will show you the list of notices issued against your GST or something like that. Well, there are two softwares which I use. Okay. Again, the first software which I use is CA tracking software only is the name. Okay. CA compliance tracking software. What does that helps is, we can upload all our monthly compliances. So every month works gets regenerated and gets assigned to a specific person. So uska tracking hota what's pending. And one-time work also we can upload there. So, all our work in hand gets listed in one place so that you don't miss any compliance or any due date. Got your point. So one is that in case there's a repetitive 12 months, say once in GST return is a 12 months process. Yeah. So once you have created a job that will recurringly create every month, correct? Is that what you mean, right? Yes. So you have an option whether monthly, quarterly, Like based on bi-monthly. the occurrence, so it can again in GSTR1, it can be quarterly filings also. Yeah. But TDS Exactly. return can be a quarterly filing. So based on the frequency you have selected, it will auto generate the work on the due date or probably a lag before some time before the due date, correct? Yes, exactly. Right. And So, the but second software which I use, that what does that do? That goes to the portal and takes out the due dates from the portal and lets me know, these are the due dates that come in the portal. So it is configured with the GST portal. so any extension would automatically be incorporated in that software, Yeah. right? Great.
So, but majority of mid-size is the wrong word. So, majority of single partner, proprietor or partnership firm usually don't use a task management software, because initially we attend a seminar, we like the idea, but and probably we also buy it for the first year, and then when at the time of renewal we think that, or we realize that we were not able to make most out of it. So, having said that, in case you are using an office management software, there's nothing as good as that. So it can be any XYZ name. I'll not try and vouch for any name, or I'll not try to endorse any name. But the idea of saying is that, one, in case you are using it, it is the best thing to use. But in case you are not using it, and so I'll just draw my inference on the movie called Unchai. Probably what was the movie was about three friends, right? Trying to climb the zero mile ऑफ द माउंट एवरेस्ट. क्या नाम था उसका मूवी का, रोल में? अमिताभ बच्चन. कौन सा? अभी जो रिसेंट मूवी आया था साल 1.5 साल पहले, डैनी, अमिताभ बच्चन और एक जन का. ऊंचाइयां तो ऊंचाइयां, राइट. So the inference was that in case you are using an office management software, it's amazingly good. But in case you are not, then you can use Google Sheets initially to start with as a tool to keep all your documents or keep all your work at one place. So how would you do that? That one, rather than keeping it on an Excel, अगर आप Excel पे रख रहे हैं, so the disadvantage is that, one, it is on a local computer. It can be a server, which we usually typically make that out of 6 computers, one is treated as a server. But one, that it is not available 24/7, because जब वो computer बंद है या जब वो server बंद है तो वो आपका data नहीं मिलता है. Second, it is only always a read only file, कि एक आदमी ने खोला तो दूसरा आदमी उसको खोल नहीं सकता parallelly. So this can be kept on Google Drive or Google Sheets, where you can write down the list of work which are pending. And again, one is list of work. Second is the status of the work. Third, I'll just show you an example as what I wanted to make here. So we had prepared this for one of our clients. So he always used to complain, not a client, a friend of mine. So just doing it big because of the sake of data. So first is the name of the client. Second is the type of work. It can be income tax, GST, ROC, whatever. Second is who is the person responsible in your office doing this. Second, then is the due date, which we usually, because nowadays extensions are very nominal. So even extension would come, जैसे अभी last time GSTR1 का आया, probably 10 को आया कि on the night it came that it has been extended for next 1 day. So now we have even changed our habit of working on extensions are concerned. So the due date, date of allocation, date of completion, work status, is it complete or still in WIP? Billing status, which is again a very important stuff in our business, that we realize the billing, or we realize the need of the billing when there's no money, or probably our account seems to be in a little difficult situation. So billing status, has it being billed or not? Or even if it is, again, another way to say that is that in case we are doing free jobs to our client, and then he'll say कि आप इतनी fees आप ले रहे हैं, they can say that these 5 tasks we have done for you and which we have not billed. So please don't feel that we are charging you high. So these are the status. So अगर आप छोटा से छोटा भी काम कर रहे हैं, one, that if you are creating a task for it, it's always easy for you to keep a count that आपके बाद मैंने 5 बार आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के दी फॉर बैंक, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग मी, बट आई हैव डेडिकेटेड माय टाइम ऑन दिस. अगेन साइन स्टेटस की हमने साइन किया कि नहीं किया, बिकॉज ही वर्क्स इन अ सिचुएशन लाइक कि हमने साइन कर दिया, साइन करके क्लाइंट को भिजवाना भी पड़ता है, तो डिलीवरी स्टेटस की हमने क्लाइंट को भेजा नहीं भेजा, रिमार्क्स. So based on your needs, you can do this one. Second is a very good thing which he had done is data validation. When you say type of work would mean what? कि हमने income tax लगाया, कि हमने GST लगाया, कि हमने ROC लगाया. So somebody would write income tax as INCOME income tax. Somebody would write as IT. Somebody would write as something else. GST को कोई, अब मानिए GST को कोई ऐसे लिख देगा
ये लिख देगा GSTR1 या GST, लिख देगा GST. So what happens is that there are 5 examples. GSTR1 may not be the right example. So there are 3 situations where I am writing the same string. इसमें एक thing, what comes good is, you're restricting the user from entering the data. मतलब आपके लिए मैंने एक डेटा वैलिडेशन लगा दिया जहां आप ड्रॉप डाउन से ये 3 आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उससे एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा रहे कि आप अलग अलग टाइप, अलग अलग स्पेलिंग. अब आप एक और भाई साहब लिख सकते हैं GST. तो अगेन जब आप उसको कोलेट करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कंप्यूटर वुड कंसिडर दिस टू बी 4 काउंट, but actually this is one. So here one important tool comes is data validation, कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यूजर को कि इससे आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना है, राइट. और इसको थोड़ा सा और अगर आगे लेके जाए, सो आप मानिए कि यू आर आउट ऑफ ऑफिस और यू आर इन सम असाइनमेंट, या सुबह एक क्लाइंट आपको फोन करके बोलता है कि मेरे को मेरे लास्ट 2 साल की बैलेंस शीट दीजिए, एंड यू से हाँ मैं भिजवाता हूँ. But during the day, you are always busy because everybody would like to do the first thing in the morning would be a productive task rather than sending balance sheets or signed statements to our clients. So now what happens is that ideally, if somebody has a good, work management style, he would either write it somewhere or कुछ भी करेगा वो उसको, और नहीं तो people हाँ ठीक है मैं भेजता हूँ, और हमने हैंग अप कर दिया. और क्या होगा उसके बाद कि वो भाई साहब को भी जब घर जा रहे होंगे या उनको जब इमरजेंसी जाएगी तब फिर बोलेंगे अरे यार मैंने आपको बोला था, आपने भेजा नहीं. The entire process in the value system gets ignored because it is not adding value to me. So the client wants it, either he urgently would want, he'll keep on calling me, or if he says कि मेरे को भी उसको भी याद आया और वो अगले दिन फिर याद आएगा सुबह ही, अरे भाई आपने मेरे को भेजा नहीं. So one good way is Google Forms. क्या आप either best way is that you tell him, I'll show you how to make it. That sir, this is a small link to my Google form. I may मैं भूल जाता हूँ usually because at the end of the situation क्या होता है ना कि this is not a value proposition for us, but client feels कि आप मेरे को ignore कर रहे हैं, मेरे को time पे reply नहीं दे रहे. So you can always either politely tell to him कि बॉस आप एक छोटा सा Google form में आपको link भेज रहा हूँ, आप इसमें डाल दीजिए कि आपको क्या चाहिए, and somebody in my office always sees it every 1 hour. एंड ही विल सेंड यू इमीडिएटली, बिकॉज मैं उसको बोलूंगा, मैं थोड़ा या अभी वो होगा नहीं ऑफिस में, मैं बोलूंगा थोड़ी देर बाद, मैं भूल जाऊंगा, वो भूल जाएगा. सो दिस कैन बी वन. तो पीपल से इवन कि माय क्लाइंट्स आर नॉट दैट इक्विप्ड कि वो मेरे को भेजेगा नहीं. नो प्रॉब्लम, वो नहीं भेजेगा. आप या तो गूगल कीप, मैंने बताया गूगल कीप में आप एक नोट बनाइए कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप एक कोलाबोरेटिव में उसको डालिए कि जो भी ऑफिस का बंदा है उसको एक उस ईमेल पे ऐड कर दीजिए कि दिस डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी सेंड. वंस ही सेंड, यू टिक एंड यू विल आल्सो नो दैट द वर्क इज डन. But if you try and ask him to fill Google Forms, the thing would happen is that one, you'll keep a track. See, after the year end, when you see this client probably has asked for his own income tax return 4 times. So anytime he's been asked for his income tax return, he calls me and says कि भैया मेरे income tax return और computation भेज. सर आपके मेल पे तो पुराना मेल भी होगा, उसको सर्च कर लीजिए. So this can be one situation. Second is, these repetitive client asking for documents. आपको लगता है कि 5 क्लाइंट है जो हर बार आपसे ही मांगेंगे, हमारे पुराने क्लाइंट है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे हमसे प्यार मोहब्बत ज्यादा है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते. तो बेस्ट है आप एक गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाइए, उस फोल्डर पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए. जब भी वो भेजे उनको लिंक भेज दीजिए, साहब ये रहा आपका लिंक, इसमें जो आप इस साल का, पिछले साल का, पिछले से पिछले साल का टैक्स ऑडिट 26 ईयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल. But again, I'll still request or insist on Google Forms is because whenever he puts in a data, what he asks, he'll also figure out, अरे यार मैंने शायद पहले भी मंगाया हो. Second, we can always make a list कि सर देखिए ये चीज आप 15 बार या 20 बार या 50 बार ये 5 repetitive, non-repetitive, value addition, non-value addition काम हमसे मांग रहे हैं. So somewhere this would even require some cost because maybe you are feeling that I am giving you an income tax return 10 times. बट अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज द टाइम आर्बिट्राज. मेरे बंदे का 10 बार समय लग रहा है, वो आपको बना के भेज रहा है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ सेइंग व्हाट आई मेंट. नाउ हाउ डू वी मेक गूगल फॉर्म्स? quickly tell you how to do that. I go to my Gmail, I click on these 9 dots, I go to Drive.
तो ड्राइव पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये न्यू पे क्लिक करता हूँ, हाँ ये न्यू वाला आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, एंड द लास्ट थिंग हियर इज गूगल फॉर्म्स। एंड गूगल फॉर्म बिलीव मी इज अ गेम चेंजर। अगर आप एक छोटे एसएमई क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं, यू कैन ऑटोमेट हिज पेटी कैश एक्सपेंसेस थ्रू गूगल फॉर्म्स। You can make small travel request with Google Form for a client, because इसमें एक फीचर और बहुत अच्छा है, that is it keeps an there's an add-on which says that approval. So if somebody in my team says that I want to leave, he fills in a Google form. His leave is only approved when I approve the form. So I go to Google Forms. For that time being, I say Vitka. तो ये मेरे से पूछता है कि क्लाइंट को पूछेगा आपकी ईमेल आईडी बताइए, क्वेश्चन बताइए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो देखिए ये जैसे मैं बोलता हूँ योर रिक्वायरमेंट, ये बोलता है पैराग्राफ, मतलब कि क्लाइंट एक आंसर दे सकता है, बट आप बोलते हैं नहीं, मुझे ठीक है चलिए एक बार योर रिक्वायरमेंट मानते हैं, वो इनकम टैक्स का कुछ मांग रहा है मेरे से, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर में रादर देन पैराग्राफ आई से कि लेट्स हैव अ चेक बॉक्स कि मैं 2 साल से ज्यादा आपको नहीं दूंगा एज ऑफ नाउ, 20, 21, 21, 22, 23। दिस अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। ये बहुत छोटा सा बेसिक एक था। तो दिस विल लुक लाइक कि योर ईमेल आईडी, योर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, आई वांट माय इनकम टैक्स आईटी, आईटीआर एंड 26 is, I write my email ID, I want submit, I want these financial year, and I submit. So the moment he submits, even ये WhatsApp पे जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि client will find it difficult to submit the Google form. So what do I do next? I go to the form. तो देखिए इसमें तुरंत दिखा रहा है there's a response, right? So ये पूछ रहा है कौन सी शीट में, मैंने एक नई शीट क्रिएट करी। So it is saying that with timestamp, this is, I can again write several criterias like my client's name, this, that. Even a client के 5 family members हो सकते हैं, तो based on your need you can do that. So your email ID, your requirement, and for the financial year. So based on your requirement, you can design this form. But the idea of saying was that every time he'll ask for a data, he'll have कि भैया आपने ये चीज 5 बार मांगी थी. And again, it is very easy. You go to file, you go to download, and you go to Excel. So this Excel sheet is being downloaded on my local computer. How does it looks like? ये मेरे लोकल कंप्यूटर में आ गई। सो आपको फिल्टर लगाना है, अगर आप बोलते हैं यू आर नॉट वेरी हैप्पी वर्किंग विद गूगल शीट, सो वट एवर यू वांट, इट इज एज गुड एज योर एक्सेल शीट, यू कैन डू वट एवर एनालिसिस, वर्किंग, प्रिंट आउट, shorting, everything is possible here. So this was a small point. Up just to add a little spice on this, I'll just take 1 more minute. What I'll do is I'll show you that there's something called validation section based approach in Google Form. सोचिए कि आपको ये, आप बोलते हैं नहीं हमको हमारा क्लाइंट देता नहीं और हमें मिलेगा भी नहीं, और आप इस आइडिया को बाय नहीं करते। सो अगेन सिद्धांत डज जीएसटी एंड आई होप फ्यू अदर पीपल वुड डू जीएसटी हियर। सो मैं सोचिए मैंने गूगल फॉर्म बनाया है जीएसटी पे। जीएसटी पे क्या, अगर कोई मेरे पास आता है बोलता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, मैं उससे कैसे डील करूंगा। अब आज के दिन में you'll get calls also कि I want to do a GST registration, so it's very easy कि I have made a Google form, I send a link कि आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, एटलीस्ट फॉर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न्ड, इफ नॉट मोर। व्हाट हैपेंस, I'll send this Google form to my client saying कि आपको किसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, इंडिविजुअल का कराना है, पार्टनरशिप का कराना है, एलएलपी का कराना है, कंपनी का कराना है, या ट्रस्ट का कराना है। देयर कैन बी डिफरेंट businesses also.
So then I go to individual and I do next. तो इसमें क्या होगा, पैन ऑफ प्रोप्राइटर. So it is saying that, pan of proprietor, pan of Aadhaar of proprietor. So it is asking documents relating to proprietor. I go back, I say नहीं मेरे को पार्टनरशिप का करना है. So then it goes and says कि पार्टनरशिप डीड दीजिए, केवाईसी ऑफ ऑल पार्टनर्स दीजिए. मैं वाला नहीं, मेरे को पार्टनरशिप का नहीं करना है, मेरे को एलएलपी का करना है. So then it says me कि मैंने एक छोटा सा डाला था कि COI of partnership चाहिए. So the idea I was trying to put across was that based on my answer of the entity, it is giving me different questions. So अगर मैंने ये एक बार बना लिया, so any time I have kept in simple form कि आपको list of screen is documents not के लिए बार बार visible, filter sir. नहीं करना है. Sorry, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है बट screen visible नहीं है. अच्छा एक सेकंड. So कहने का मतलब ये था कि अगर मैं इंडिविजुअल डालता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट जाता है तो पैन ऑफ प्रोप्राइटर मांग रहा है. ठीक है, मैं बैक करता हूँ, मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप फर्म, इस पे नेक्स्ट करता हूँ तो ये पार्टनरशिप डीड मांग रहा है. सो अगर कोई भी आप ऐसा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज भेजते हैं टू समवन व्हिच हैज डिफरेंट, मतलब अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म बनाना पड़े और इतने टाइप ऑफ एंटिटी के लिए अलग अलग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो या तो आप ऑलवेज एक अलग अलग 5 फोल्डर बना के रखेंगे कि इंडिविजुअल आएगा तो ये चेकलिस्ट भेजना है, पार्टनरशिप आएगा तो ये भेजना है, या फिर एवरीबडी एनी टाइम पीपल वुड आस्क विल मेक अ extract out of the respective things. So Google form can be a good situation कि anytime somebody asks me, I will send him and उसके basis पे he can make decisions कि यार मेरे को ये documents चाहिए. So this was all from my side. I hope I was able to put things across, and any questions I'll be happy to take. Sorry Sachin ji, in between I didn't realize that the screen is not shared. वो जो आप सुमित जी आप बोल रहे थे, जैसे कंपनी सिलेक्ट किए तो वो अलग ही गूगल फॉर्म आ जाता है, एलएलपी सिलेक्ट करेंगे तो अलग एक आ जाएगा, वो कैसे करना है? Correct. Very nice. Thank you so much for the questions. So आप पहले जो गूगल फॉर्म बनाया था मैं वो आपने देखा था, जो एक विपका वाला आपको एग्जांपल दिया था. हम्म। तो नहीं, इसमें क्या, उस समय स्क्रीन नहीं आपका शायद आ रहा था। अच्छा सॉरी. तो एक काम करते हैं ना, फिर से एक नया फॉर्म बनाते हैं. सोचिए फाइल में गए, न्यू गूगल फॉर्म में गए, और इसको अपन फिर से वही बनाते हैं, जीएसटी इसी में दिखा दें. तो इसमें क्या है कि ये देखिए, ये गूगल फॉर्म है, सिंपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और ये अलग अलग सेक्शन है. ठीक है, तो ये हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए कि भाई ये सेक्शन 2 is related to individual, section 3 is related to partnership firm, section 4 is related to LLP, section 5 is for company, and section 6 is for trust. So the difference what we are doing here is जब हम फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे सेक्शन बेस्ड आंसर डालते हैं. देखिए इसमें कंटिन्यू टू सेक्शन, इस पे क्या होगा कि पहले वाले को आप बेस्ड ऑन योर दिस वैलिडेशन ये आपको इसे सेक्शन पे लेके जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेक्शन बेस्ड आंसर. ये सेक्शंस कैसे बनाते हैं, ये मुझे ये एक बार देखिए बताइएगा। ये देखिए आप, पहले मैं एक डालता हूँ, यहाँ पे डालते हैं अपन ए, फिर डालते हैं सी. हम्म। अभी यहाँ पे अपन जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर्स. ओके। तो ये, और यहाँ पे हम एक ऐड सेक्शन, ये जो डबल डॉट्स है इसे हमने एक सेक्शन बनाया पहला, फिर एक और सेक्शन बनाया, फिर एक और सेक्शन बनाया.
अब वापस यहाँ पे जहां हमने टाइप डाला था, यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर मेरा रिस्पॉन्स ए है तो टेक मी टू सेक्शन 2। ओके। यहाँ मेरा रिस्पॉन्स अगर बी है तो टेक मी टू सेक्शन 3। यहाँ अगर मेरा रिस्पॉन्स सी है तो टेक मी टू सेक्शन 4। तो क्या समझ। होगा, और इस सेक्शंस के नीचे फिर हम एक क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। जैसे यहाँ हम एक और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, हम एक क्वेश्चन डाल दिया। सो अब ए होगा, एक बार टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर हुआ कि नहीं। सो मैं अगर ए करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरे को सेक्शन यहाँ लेके जाता है, ऑप्शन जहाँ देखिए यहाँ मैंने ऑप्शन डाला था। मैं बैक करता हूँ, मैं बी लेके जाता हूँ, बी में मैंने कुछ नहीं डाला है, तो बी में देखिए कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर सर? यस यस, थैंक यू। सो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ वैलिडेशन। अगर वैलिडेशन नहीं होता, प्रॉब्लम है, हर बार मेरे को मतलब मैं सेक्शन ए मेरे लिए रेलेवेंट नहीं भी होता तो मेरे को पूरा सेक्शन ए चेक करना पड़ता। जी सर। आई थिंक वी आर डन, वी हैव ऑलरेडी ओवरशूटेड 10 minutes. Yes, yeah. So, Bhaiya, it was really nice, even though we are a very small number of people here. But it was a very nice interaction. We got to learn a lot from you. Thank you so much, Bhaiya, for this amazing insights. Mail log कैसे करना है. I never thought that Google Form can be used to, get data from clients as well. Even we have used Google Form to do stock audit also. Hey, wow. So this is like really amazing thing which I learned. So, now just this thought, starts your mind working. How can you use Google Form? It's not just a form. It Correct. can be data entry software also. So really nice. Thank you so much for your time. Thank you, Thank Via. And thanks to Vipka. And tomorrow we have a fourth and the last session on Chat GPT and Excel. So Rahul, if you have any concluding remarks. No, I guess all good. Thank you. Thank you so much. So we all meet tomorrow, same time, same place, same link. Sumit Banga भैया है Thank you everyone. Yeah, thank you everyone. Okay, bye bye. Bye. Thank you everyone. Good evening. Thank you.